this will again be very insightful talk for everyone. They may get benefited from the content of this talk, and I am thankful to Dr. Pranav sir. He has joined again in this Science Dialogue series, which is being initiated by Gopalji sir. And approximately 6 months back, this initiative was started, and in continuation to the all lectures which have been conducted under this tag of Science Dialogue series, all of them have benefited the audience a lot. So in the continuation to this series, today we have been joined by Dr. Pranav Prabhakar sir, and sir is a professor and head at Department of Research Impact and Outcome, Research and Development, LPU, Punjab, one of the most known university and well-known university at the North India, private university. So this is just not the introduction to the today's speaker, Dr. Pranav Prabhakar sir. He has a lot number of research publications and citations, more than 2,000. H-index in 22 and I-10 index is around 31, which speaks itself for the volume of the code of conduct for the research of Dr. Pranav Prabhakar sir. And to give me a bit of introduction for his academic and research initiatives, or what he has done earlier to achieve all these accolades. So he has carried out his PhD in biotechnology from Indian Institute of Technology, IIT Madras in 2011. Earlier back then, he has completed his master's in biochemistry from Patna University. He started working as assistant professor in LPU Punjab, and he has completed a lot of number of administrative responsibility as a research coordinator. He has done a marvelous job in that. And his research area, it includes the synergy, phytomedicine, metabolic disorders, and he has published more than 80 research publications, 80 publications, which includes the research articles, book chapters, books, all those they are actually talking about the volume of the work Dr. Pranav Prabhakar has carried out. And recently in 2024, in this year only, there are few differences which I could actually find regarding his role of AI in academic writing. He has published few articles like AI in autonomous system in BioWeb Conference 2024 and few more others. So what all these things, they are actually speaking itself for the volume of Dr. Pranav Prabhakar sir expertise in the field of this biotechnology, and the recent one, which is the artificial intelligence. In the previous lecture also we had some talk from Dr. Ashwani Kumar on the role of this AI in bioinformatics, and today's topic, it is basically related to the role of AI in academic writing. So not taking too much time from here on, I actually hand over this digital platform to Prabhakar sir, so that he can enlighten us with the talk, or with the insights regarding the AI role in academic writing. So welcome, Dr. Prabhakar sir. So I hope you may be finding our audience very interesting, and they may be connecting with you and maybe interrupting you during this complete session. So sir, now please, this virtual platform is yours. थैंक यू मैम पुराना इतने लंबे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं थी सर. एक्चुअली जो आपका रिसर्च वॉल्यूम है ना, दैट एक्चुअली स्पीक्स, एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हेन द स्पीकर्स हु आर जॉइनिंग अस in this series, they are all very renowned in their own field. They have done marvelous job in their field. So it is our duty also to introduce correctly to the audience, so that they may also know that what kind of role you can play in guiding one or other candidate. Maybe one of us, maybe two of us may get actually inspired by whatever you are going to talk to us. So this is my just a bit to the introduction. Thank you, so what we will do today, I will have a few slides. We will talk something about the slides. I will give you the slides. I will share with the slides also. That has a collective list of some of the AI tools which normally as a researcher we should use or we should understand.
उस पे बाद में आएंगे. Then we will go for hands-on training. Hands-on means I will show you some of the tools, some of the things which will help you, जो आपको help करेगा how to increase your efficiency. So just give me a few minutes, 1 second, and let me. Is my slides visible? Yes, sir. Yes, thank you. So the title which we have selected is the role of AI in the research and academic writing. So probably if you'll say in our daily life, roughly we have seen in our home we are having Alexa. If you are using iPhones, we are having the artificial intelligence based system in iPhone, that is Siri. How these things are working, or you might have seen about the self-driving car, or there are number of system where we are having the face recognition system works. इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे ना, if you are going to think about or if you are talking in your within your family कि आज मुझे पिज्जा खाना है, suddenly open your website and you will see some of the advertisement of the pizza will come in on your Facebook, on some of the websites. अगर आप पढ़ेंगे कि मुझे कहीं एडमिशन लेना है तो सडनली नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाएंगे. So all these things are normally based on AI, that is artificial intelligence. So they normally understand, or you can call it, they listen you, or based on their understanding they give you, they suggest you certain things. So what is the basic definition of artificial intelligence? It is the ability of a computer means IT, or a kind of computational system, information technology, to think and learn and then give us output. Whenever we are talking about the artificial intelligence, why we should use it? हमें use क्यों करना चाहिए? Some benefits we should get it. So what are the benefits? Normally it increases your efficiency. कैसे efficiency बढ़ाएगा? When we will talk about, when we will use it, that time we will see it. So artificial intelligence analyzes the large volume of data, and literature much faster than the human researchers. Probably आपने कभी यूज किया होगा, if everyone might have heard about the bioinformatics, probably आपने कोर्स करा होगा, बहुत सारे लेक्चर्स तो मेरे bioinformatics पे भी हुए हैं, where we are normally I'm giving you one of the example. हम सीक्वेंस को अलाइन करते हैं. We are going to do the alignment, either it will be pair wise alignment or the multiple alignment. आप सोचिए मैनुअली करेंगे तो कितना टाइम लगता है, and whenever you are doing some kind of online tools, it gives you in the minutes or the seconds. So normally it increases. अगर आपको एक बुक दे दिया जाए और बुक में से मैंने बोल दिया कि सर्च कीजिए कुछ टॉपिक्स, कुछ टाइटल्स, कुछ टर्म्स, how much time you will take it? And if I will have a kind of tool which will give me a result within the second, so normally it increases our efficiency. Plus computational systems or IT systems are having the better accuracy than the human. Humans normally, हमारे mind जो होता है ना, it is going to be influenced, or it is going to be having the number of things. Variability, आप ऑनलाइन सिस्टम में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में वेरिएबल्स को कम कर सकते हैं, बट ह्यूमन के पास बहुत सारे वेरिएबिलिटी होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, and as much as variable you will have, that much normally the possibility of error will be there. So in online tools or online systems or AI based systems having the more accuracy, because variations को हम कम कर लेते हैं. Plus it also helps us in the language supports, grammar checks, translational systems. Probably आप यूज टूल में एक टूल यूज करते होंगे, मोस्ट ऑफ यू आर लेंस, गूगल लेंस, उसको आप मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं. इट अंडरस्टैंड वन लैंग्वेज टू द अदर लैंग्वेज. आपको कौन से लैंग्वेज को पढ़वाना है और कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, दैट मोबाइल एप्लीकेशन कैन इजीली डू इट. दैट इज एआई बेस्ड सिस्टम. देन इट इनहांसेस क्रिएटिविटी. अभी आप जाएंगे, प्रोबेबली अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो ऑन योर लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट एज इज ए ब्राउजर विच इज नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर इज देयर. आप उसमें एक यूज कीजिए, उसमें इनबिल्ट सिस्टम आते हैं कॉपी करके. सो दैट नॉर्मली क्रिएट्स एनीथिंग. आप इमेज बताइए कि मुझे किस तरह का इमेज क्रिएट करना है, इट विल गिव यू 4 ऑप्शंस. सो
It enhances your creativity also. आप suggestion पूछिए, we will go to the chat GPT also and we will show you how it is going to help us. अब आते हैं, what is the use of this AI in academic writing and where we can use it. So if you will start academic writing, I have divided whole academic writing into 5 different aspects. So it starts with the pre-writing, where normally we understand the questions, task, read, annotate, evaluate our sources, think about the issue, mind map. Then second one is drafting, where we are normally going to plan our writing, what are the components will be there, whatever the topics, subtopics will be there, and then we write it. So that will be our drafts. Preliminary draft और primary draft हम बोलते हैं उसको. Then we are going to refine it, revise it. After that one we are doing the proofreading before submitting to the journal or before submitting to the particular place. अगर मेरा assignment है तो मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में सबमिट करता हूँ, मेरा पेपर है तो मैं जर्नल्स को सबमिट करता हूँ, मेरा बुक चैप्टर है तो मैं एडिटर्स को सबमिट करता हूँ. So these are the 5 steps, and roughly if you will see all different stages or ऑलमोस्ट ऑल दी स्टेजेस, हर एक स्टेज पे आपके पास AI बेस्ड टूल्स अवेलेबल होते हैं विच यू कैन यूज इट, जो मैं बाद में बात करूंगा, आपको दिखाऊंगा. ओके, सो इफ यू विल से इन एकेडमिक राइटिंग इट इज, जब आप एकेडमिक राइटिंग में लिखते हैं तो दिस इज ए सजेशन काइंड ऑफ थिंग्स. आई हैव ए 9 डिफरेंट सजेशंस व्हेन you are starting writing to your things. If you are doing manual writing, not artificial intelligence, because many places artificial intelligence systems are not acceptable. So if you are writing, so these are some of the suggestions. First, use your formal vocabulary whenever you are writing. Why these 9 points are important? Because academic writing is a formal style of writing. It means it is different from the type of writing or the different from the what we speaks. हम जो बोलते हैं उससे हमारा लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है. So first use the formal vocabulary. Second, use formal verbs like avoid 2 word verbs like here. यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप लिख रहे हैं कि मुझे establish वर्ड यूज करना है, उसके बदले में आप सेटअप वर्ड मत यूज कीजिए, बिकॉज दिस इज ए 2 word verbs. सो अवॉइड द यूजिंग ऑफ 2 word verbs. जहां मुझे लिखना है गो डाउन, उसके बदले में मैं सिंगल वर्ड वर्ब यूज कर सकता हूँ, दैट इज द डिक्रीज. सो इट इंक्रीज योर रीडेबिलिटी और द आपकी कंटेंट का इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ता है. यूज फुल वर्ब्स लाइक समटाइम वी आर गोइंग टू राइट कांट. In the professional writing, in the normal academic writing, we should not use can't, we should not use won't. We should use the full verbs. Then use the formal grammars. Use full statements. Be precise, concise, whatever you want to say. आप normally don't tear your sentences. आप जबरदस्ती का लंबा मत कीजिए. Be precise, clear and accurate, whatever you want to say it. As must use references and proper evidence. Citation is one of the important criteria. यार references जिसको हम बोलते हैं, so that is important in the literatures, in the writing styles. Use heading statements and use transition words. Whenever you are going to write, connect 2 different sentences or 2 different paragraphs, so there we normally वो लगना चाहिए कि flow में you are going. So use transition words like some of the transition word I have given here. Additionally, in contrast, for this reasons, ये सब कुछ connecting words हैं जो 2 sentence 2 paragraph को add on करते हैं. This is a summary of some of the AI tools. इतने ही AI tools नहीं होते हैं. अगर आप डाल देंगे गूगल में कि give me some of the AI tools, it will give you a lot of AI tools. So depending on your different aspect of the academic writing, मैंने यहाँ 30 academic tools के बारे में दिखा रहा हूँ. Like for literature search, we are having Google Scholar, PubMed, IEEE Explorer, Web of Science or JSTORs. For grammatical or writing assistance, we are having Grammarly, Pro Writing Aids, Hemingway Editors, Wordturns, Wiles. So for every stage of academic writing, we are having one or more different tools. इसमें से कुछ tools मैं आपको दिखा दूंगा जब मैं बात करूंगा. So for literature search, अगर आप चाहें तो screenshot ले सकते हैं, because इसमें से कुछ tools मैं use करूंगा later on. I will use Elicit, I will use Research Rabbit, मैं connected paper use करके दिखाऊंगा, open map use, ये ऊपर के चारों मैं use करके आपको दिखाऊंगा.
how we are going to use it and how it is going to help us in the literature search. Then we are going to have, this is a home screen of illicit. Normally some of the सारे जितने भी AI टूल्स दिखा रहे हैं because they are market based, because आज के जमाने में most of the people are going to use these AI tools, so everything is subscription based. For free we are going to get options, but you don't have every options which is available into subscription that will be available along with the free. Free में आपको restricted applications मिलते हैं, but you can use it almost all the tools freely for some portion of the things. This is my connected papers. मैं इसमें से जाऊंगा, दिखाता हूँ आपको चार. So these are the 4 tools I will use it. First I will finish the slides and then I will go to hands-on applications. Then for AI tools for collaborating writing, like मैं पेपर लिख रहा हूँ जिसमें मेरे गुजरात से कोई मेरे को ऑथर हैं, और कोई को ऑथर हैं जो दिल्ली से हैं, कोई को ऑथर हैं जो यूके से हैं. So how we will collaborate for the same paper? So these are some of the applications which helps you in the collaborating writing. एक ही पेपर को आप लिखिए, शेयर कर दीजिए 5 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, and everyone will write on the same paper, same document. So these Google Docs, Office 65, Slack, Dropbox, these are going to help you in the collaborative writing. These are the AI tools. इसमें से कुछ आप probably use करते हैं, कुछ मैं आपको दिखा दूंगा. Then plagiarism checks again. So we are having number of tools, but the common tools जो हम use करते हैं, we are going to use Zotero, we are going to use Turnitin, we are going to use Urkund. Then Grammarly also premier version is having plagiarism checking. Copy Escape, Unicheck, Plagscan, these are some of the tools which helps us in the plagiarism checking. Referencing and citations, दोनों अलग-अलग चीजें हैं. Probably some other day we will talk more about the citation and references and how they are different and how we are going to manage it. So for that also we are having the different tools. So I will go to the hands on the website and then I will show you. Just give me a second. Prabhakar sir. Yes, ma'am. Actually, I have one question. Yes. Many times, even in this just slide that you showed us, you mentioned about this Zotero and EndNote. These reference citing or basically reference incorporating tools, these are available for last, as far as I remember, in 2013, 2012 when I was trying to wind up my things. At that time also these tools were available. Yes. At that time these were not considered that much into the AI tool, and today also I am using this Zotero for reference management. Then why these softwares are kept as a AI tool? I'm telling you, like मुझे सर्च करना है, मैंने एक 100 आर्टिकल्स पढ़ा ऑन सिमिलर टॉपिक्स. मैं आपको इंडियनोट का एग्जांपल दे रहा हूँ. दैट इज ए रेफरेंस मैनेजर. नॉर्मली हम इंडियनोट को रेफरेंस मैनेजर जैसे यूज करते हैं, रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर, रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर, राइट? अब in EndNote, either you are going to use web version or you are going to use your desktop version of EndNote. Yes. Depending on your literature, depending on your 100 references or 150 references or whatever reference file you are having, इसके बेसिस पे it can suggest you, if you are going to ask you which journal is best suited for my paper. आप अपने जर्नल्स, अपने मान लीजिए मेरे पास 100 आर्टिकल्स हो गए हैं, उस 100 आर्टिकल्स में जो भी एक थीम होगा, उस थीम के बेसिस पे EndNote कैन सजेस्ट यू विच आर्टिकल इज बेस्ट सुटेड फॉर योर आर्टिकल, जहां आपने ये सारे रेफरेंसेस यूज किए हैं. दैट इज वन यूज. डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स, दैट इज one way. So normally every referencing tools have those journal suggesters. That is AI based only. ये एक एग्जांपल था. Okay, sir. So how many of you have used ChatGPT? I did. Yes, sir. I regularly do. Same. Regularly do. So normally, if you have not subscribed it, we are going to see this 3.5 version currently, right?
Yes, sir. And how many of you subscribed it? 4. ChatGPT 4. 4. Normally, this is the ChatGPT 4, where we are having different GPTs. So, when you are going to purchase it, procure it, you are going to see this ChatGPT 4, and there we are having automatically this Explore GPT comes. So, this Explore GPT, if you go there, this will give you a number of different options for different style things, like if you will say write for writing, for productivity, for research analysis, for programming, for education, for lifestyle, for different aspects we are having different number of GPTs. So आप किसी एक को select कर सकते हैं, you can search your refine your searching based on that one. अगर इसी में मैं चैट जीपीटी 3 यूज करता तो मैं एक डिफरेंस आपको बता देता हूं. आई विल नॉट हैव एनी ऑप्शन हियर टू अपलोड इट. ठीक है, बट इफ आई विल हैव ए चैट जीपीटी 4 आई विल हैव ए ऑप्शन फॉर अपलोडिंग. आई कैन अपलोड एनी पेपर, like let me see if I will have any paper, like I am going to upload a PPT, and what I will do, I will ask them read this PPT. This is a PPT for one of my PhD students. I will चैट जीपीटी को नॉर्मली हम करते क्या है कि आपको इनको बताना होगा कि चैट जीपीटी कैसे बिहेव करेगा, हाउ इट विल रिएक्ट. तो पहले अगर मुझे इंस्ट्रक्शन देना है उसको नॉर्मली हम स्क्रिप्ट बोलते हैं. सो यू हैव टू राइट ए प्रॉपर स्क्रिप्ट. अगर आपने स्क्रिप्ट अच्छा लिखा तो योर रिजल्ट विल बी गुड. इफ यू आर नॉट राइटिंग ए स्क्रिप्ट, योर स्क्रिप्ट विल बी बैड, तो आपको रिजल्ट उतना बुरा ही आएगा. सो पहले मैं इसको लिख रहा हूं कि आई एम ए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट टीचिंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स read the attached PowerPoint slides and suggest 20 best, or you can I will let and summarize them in points. मैंने बोला पीपीटी को रीड करके मुझे बस समझा दो, समरी दो. तो आप, मैंने उसको बोला कि मैं बायोकेमिस्ट्री और उस तरह से मुझे उसको समझाना है. सो वो हर एक स्लाइड को पढ़ के हमें उसकी समरी बना के देगा. अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो स्लाइड में मेरे पास कंटेंट लिखा हुआ, बुलेट में लिखा हुआ या इमेज होगा. सो उसको बेसिस पे दे आर गोइंग टू गिव मी. आपको क्वेश्चन बनवाना है, आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग बनवाना है, आपको एनीथिंग यू कैन राइट, यू कैन, एंड दैट विल गिव यू. ये एक ऑप्शन है चैट जीपीटी का. इसमें आप मेरे टॉप पे देख रहे हैं, दिस इज एडिट जीपीटी. ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कि जो तुमने लिखा है इसको पैराफ्रेज कर दो. तो इसको पैराफ्रेज करेगा, एंड आई हैव टू ओपन दिस, क्लिक दिस जीपीटी. दिस इज ए काइंड ऑफ, यू कैन कॉल इट एड ऑन टूल्स इन क्रोम. सो जस्ट गिव मी, आई विल एक्सप्लेन, ओपन इट एंड पैराफ्रेज इट. तो इट विल पैराफ्रेज, इट विल गिव यू डिफरेंट टूल्स, और पैराफ्रेज करने के बाद वो जो जहां जहां चेंज करेगा वो सारे मुझे बता देंगे. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द टूल्स. आप यूज करेंगे तो आप सीखेंगे कहाँ. दिस इज वन टूल्स. मैंने, आप मेरे में देख रहे होंगे यहाँ मैंने कुछ सेलेक्ट किया हुआ है, स्कॉलर जीपीटी. ये गूगल स्कॉलर टाइप का है. दिस इज फॉर बायोकेमिस्ट्री, आई हैव सेलेक्टेड फॉर माय यूज, चूंकि मेरी बायोकेमिस्ट्री है तो मैंने बहुत यूज किया हुआ है. So depending on your use, you can select a specific GPTs and then refine your searches in that GPT based. तो ये एक टूल है जो मल्टीपर्पज के लिए है, सभी चीजों के लिए है. अगर मुझे एक वीडियो बनाना है यूट्यूब का, तो मैं इसको वो इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि आई एम गोइंग टू क्रिएट ए 10-minute वीडियो for my YouTube. Please write a script for the same video on metabolic
disorders. Sorry. मैंने लिखा कि मैं 10 मिनट का वीडियो बनाने वाला हूँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे, उसका स्क्रिप्ट मुझे लिख के दो। तो इट विल गिव यू 10 मिनट वीडियो स्क्रिप्ट। आप बोलेंगे मुझे पीपीटी बना के दो, इट विल गिव यू पीपीटी। इफ यू आप बोलेंगे मुझे इमेज बना के दो, इट विल सजेस्ट यू सम ऑफ द इमेजेस। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टूल्स पे। ये मैं रिजल्ट दे रहा है कि हमारा टाइटल क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कॉम्प्रिहेंसिव। पहले 0 से 30 सेकेंड तक हमें बोलना है इंट्रोडक्शन पे, जिसकी स्क्रिप्ट ये है। देन 30 से लेके 2 मिनट तक हमें इस स्लाइड पे बोलना है, मतलब इसको बोलने में टाइम लगेगा। देन कॉज एंड टाइप्स, सो इट विल गिव यू ए स्क्रिप्ट। आप इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे कैसे बोलना है, तो वो डिफाइन करके देगा। सो दिस इज माय वन ऑफ द एआई टूल्स जो सबके लिए एप्लीकेबल है एंड मल्टीपल चीजों में यूज कर सकते हैं। इवन इफ यू हैव नॉट चैट जीपीटी 4, तो सिर्फ आपके पास ये जीपीटी के ऑप्शंस नहीं आएंगे, अपलोडिंग के ऑप्शन नहीं आएंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू इट। सेकंड, we'll go to see this AI tools that is called as heuristica. आपको लॉगिन करने पड़ेंगे। once you will logged in that one, so I have just signed in and get started. Tell me any topic, like my वेस्ट मैनेजमेंट पे कर रहा हूँ सर्च, समथिंग वेस्ट मैनेजमेंट, जस्ट आई हैव सर्च्ड इट एंड ये मेरे राइट हैंड साइड में यू कैन सी नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस वी आर हैविंग। सो व्हाटएवर यू वांट टू सी, आप इसमें से क्या सर्च करना चाहते हैं। जस्ट मैं इलैबोरेट करना चाहता हूँ इसको, जस्ट इलैबोरेट इट, इट विल इलैबोरेट इट। ठीक है, इसमें आप क्या इसके हाउ, तो आप हाउ पे क्लिक कीजिए, तो दिस इज ए कनेक्टिंग लिंक्स। आप एक के बाद दूसरे को आगे करते जाएंगे। जस्ट आई थिंक मेरा नेट स्लो है। सो देन हाउ, तो So this is फर्स्ट टाइम रिसर्चर के लिए दिस इज वन ऑफ द गुड, वेरी गुड टूल, जहां आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी टॉपिक पे पीएचडी टॉपिक करना है, मुझे किसी टॉपिक पे असाइनमेंट बनाना है, तो आई कैन सर्च ए टॉपिक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सजेस्टिव क्वेश्चंस यू आर हैविंग, सजेस्टिव ऑप्शंस यू आर हैविंग कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं, एंड इट विल बी ए कनेक्टेड विथ ईच अदर। आप देख रहे हैं यहाँ एरो आपको दिख रहा होगा, तो दीज आर जस्ट कनेक्टेड विथ ईच अदर। So that is second one, and इसको मैं और छोटा कर दूं तो ये जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ दिखेगा। तो दिस साइड यहाँ से आप छोटा इसको साइज को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। So you can search for any kind of information whatever you want to do for this one. So this is called heuristica.ca. That is my second tool, AI based tool. This is again AI based tool. Third मैंने बोला था research rabbit. This is AI based tool, researchrabbit.ai. This is a research tool for the literature search. जब आप फर्स्ट टाइम लिटरेचर करते हैं, वन थिंग इज इट नीड टू बी, यू हैव टू साइन इन, आपको लॉग इन या साइन इन करने पड़ेंगे। सो चूंकि मेरा साइन इन ऑलरेडी किया हुआ था, तो जस्ट आई हैव टू लॉग इन, सॉरी मैंने पहले इसमें सर्च किए हुए हैं। यू कैन सर्च एनी टॉपिक एंड रिफाइन योर वर्क। लाइक मैंने अगर सर्च करा न्यू कलेक्शन, मुझे सर्च करना है डायबिटीज,
तो डायबिटीज पे मैं बहुत सारे पेपर ये सर्च करके मुझे देगा, देन आई कैन रिफाइन इट टू एक काइंड ऑफ कॉमन टाइप ऑफ पेपर विल बी एडेड फॉर वन पूल. सो रिसर्च रैबिट को आप यूज कर सकते हैं. दिस इज ए काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट टाइप ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट टूल्स जो हम बात करने वाले हैं दैट इज यस. The Research Rabbit is free or a paid tool? इट्स फ्री. ओनली थिंग इज यू हैव टू लॉग इन देयर. आपको लॉग इन करने पड़ेंगे पहले. Thank you so much, sir. Thank you. And next is Open Knowledge Map. This is again similar to the Research Rabbit. इसमें आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ दो ऑप्शन हमें मिलते हैं. एक लाइफ साइंसेस के लिए जो पबमेड के डाटाबेस को यूज करता है, दूसरा बेस को यूज करता है जो फॉर ऑल डिसिप्लिन है. क्योंकि मुझे पबमेड अगर यूज करना है तो मैं पबमेड सेलेक्ट कर लूंगा, जो मुझे बेस यूज करना है तो मैं बेस सर्च कर लूंगा. अगेन यू कैन सर्च हियर, कुछ भी आप सर्च कर लीजिए. जैसे नीचे में सजेस्ट दिया हुआ है कि कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, मैं मेटाबॉलिक डिजीज सर्च कर लेता हूँ. सो सर्च मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिजीज. इट विल अगेन गिव यू सिमिलर टू द रिसर्च रैबिट. ये भी हमारा एआई बेस्ड टूल है जो आपको हेल्प करता है इन डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स. एक्सक्यूज मी सर. यस सर. सर इसमें रेफरेंस, जैसे कि हम अगर कोई पैराफ्रेजिंग करवाते हैं तो क्या उसमें साथ साथ रेफरेंस मैनेजमेंट भी कर सकता है क्या ये? पैराफ्रेजिंग करते हैं तो रेफरेंस मैनेजमेंट साथ में नहीं करेगा. चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? कौन से टूल? जी चैट जीपीटी. चैट जीपीटी में रेफरेंस पूछ सकते हैं लेकिन रेफरेंस उसकी उतनी एक्यूरेट नहीं होती है. तो डोंट फॉर रेफरेंस यू कैन यूज अ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल. Okay sir, like Mendeley or any other. Mendeley, Zomato, Grammarly, cite you like, आपका again Zotero, Refman, number of tools are there. So आप उसमें से कोई सा भी tool use कर सकते हैं. You can use it. Okay sir, thank you. Okay, so this is my open map. I have searched metabolic disorder and I have got this one. आप हर एक में देखेंगे, you can tell this has sorted all the papers where metabolic disorders are there. उसको डिफरेंट बॉक्स में आप देख रहे हैं. सो दीज आर सम कैटेगराइजेशन. आपको एक बॉक्स और समथिंग थिंग्स आर मेंशन्ड देयर. सो इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन रिफाइन योर सर्चेस. मैंने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे कुछ पेपर सर्च किया और उसको मुझे स्पेसिफाई करना है, कैटेगराइज करना है डिफरेंट कैटेगरी में. सो दिस विल हेल्प यू इन द रिफाइनमेंट ऑफ योर रिसर्च और रिसर्च आर्टिकल्स. ठीक है. ग्रामरली तो एवरीवन इज गोइंग टू यूज, राइट? ग्रामरली आप सारे यूज करते हैं. दैट इज ए फ्री टूल्स. जैसे आई एम गोइंग टू ओपन ए वर्ड फाइल. ग्रामरली का हेल्प कहाँ होता है? बिकॉज हम फ्री टूल्स यूज कर रहे हैं तो हमारे में आप ये ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे. सो दिस सजेस्ट ए काइंड ऑफ, दिस इज ए ग्रामरली टूल्स which suggest you what are the different possible corrections. So that is also again AI tool only. So it give you, अगर free है तो आपको free वाले तो सर्विसेज मिलेंगे, but if it will be purchased one, it will be subscribed one, so I will have almost all the options. And if you are going to purchase Grammarly, तो वहाँ आप reference management में भी उसको use कर सकते हैं. You can use it for reference management also. Google everyone using, right? Google तो सारे यूज करते होंगे, right or wrong? Yes sir, right. Right. So how you are going to use Google? If you have to search certain things, how you are going to search it? In their search box. अब Google सर्च बॉक्स, Google is one of the best AI tool जो हम कॉमन सबसे every day and everyone is using it, right? Yes. How you are going to use Google? Like I have to search certain things. I want to use the mango. How you are going to search it? See, AI tools हम यूज करते हैं ना. Why I am asking these questions? Because when you are going to use AI tools, AI is going to search certain things online.
whatever options will be available online, it will search from that one. And if you are not going to give the proper command, what was the proper command? Because मैंने आपको chat GPT के समय बोला था कि how you are going to write your content command, or you can call it a script. According to that one, you will get the result. So जब आप Google सर्च करते हैं या Google Scholar, that is one of the best or easiest tool and freely available for everyone. आप chat GPT यूज करें न करें, Google के पास every चीज के आंसर होते हैं. So how you are going to use Google and Chat GPT, दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो मैं बताता हूँ. Google के पास नॉर्मली हम जो यूज करते हैं, दो टूल हम यूज करते हैं. We are going to use two different tools. Yes, Muskan, you can ask your question. Good evening, sir. Good evening. Sir, actually, I had a doubt that when we are actually in our university, we don't have access to Scopus or something like these kinds of databases, and because of this, we cannot do SLR. So I just wanted to ask you that is there any tool, AI tool, which we can use and for that purpose as well? For literature review, right? Yes, sir. The systematic literature review. That I'm asking. For literature search or literature review, you can search if it is a medical field or biological field, you can use PubMed, or you can use that, because most of the journals, most of the articles which is the medical field based or biological field, that is normally available on the PubMed. But we don't have any alternate option for this. You can call it the Scopus or Science Direct. There you can get some of the things. The best, easiest tool is Google Scholar, and that I'm telling you how you can use the best out of the Google and Google Scholar. आप Google Scholar को कैसे best way में use कर सकते हैं, आपके best output, best efficiency कैसे ले सकते हैं, that I'm going to tell you. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. So whenever I'm going to search certain things, हम normally Google में जो मन में आता है वो post कर देते हैं या paste करते हैं. It gives you, if you are going to search certain things in Google, it will search everywhere. वो न्यूज़पेपर के इंफॉर्मेशन में हो, वेबसाइट पे हो, किसी एडवर्टाइजमेंट में हो, किसी जगह पे हो. तो अगर मैंने मैंगो सर्च किया तो मैंगो फ्रॉम एवरीवेयर इट विल गिव मी. जहां भी मैंगो वर्ड उसको मिलेगा, मैंगो थिंग्स मिलेंगे, वो एडवर्टाइजमेंट में हो, कोई जूस बेच रहा है तहाँ वहां पे हो, सब जगह से देंगे. सेम मैंगो इफ आई एम गोइंग to search in Google Scholar, it will give me only from the literatures, from the research articles, from the book chapters, or the, you can call it the online scientific literatures में से search करके देगा. That is one basic difference. अगर मुझे Google में use करना है तो certain things you can write it. Whenever you are going to use certain things in Google Scholar, Google, and you want to search only exact meaning, like I want to search some word, the application of mango. So you can write those things in the quotations. Please, just I'm going to do it here. This. तो 3 मिनट पीछे से कर दीजिएगा. If you want to search anything, जो मुझे सर्च करना है कि मुझे सिर्फ यही इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके अलावे, बिकॉज गूगल आपको पूरी दुनिया में से सर्च जो भी ऑनलाइन अवेलेबल टूल्स होंगे, देयर इट इज गोइंग टू सर्च इट. बट इफ यू वांट टू रिफाइन योर सर्च की आई नीड ओनली दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट टाइम यू कैन पुट योर सर्च टू थिंग्स contents in under the quote. It means it will search only those specific terms or specific sentences which will be under the quotations. Clear? जैसे मैंने सर्च किया था यूज ऑफ मैंगो इन ह्यूमन बॉडी, अब इसने सर्च किया सिर्फ मैंगो इन ह्यूमन बॉडी, यूज ऑफ मैंगो इन, तो इस तरह का इंफॉर्मेशन को कहीं नहीं मिला. सो नो रिजल्ट फाउंड. अगर मैंने इसको बिना कोट्स के डाले रहते तो ये मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर दे जाता है. अब यहाँ देखिए सेम थिंग को I am going to put it without quote. So now it will not give me those type of information. It will search everywhere. So you can refine your search by putting your search
tips या search quotes या statements under the quotations. That is one tip. ठीक है? Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड थिंग, जब आप सर्च करते हैं तो मुझे कुछ चीजें चाहिए. अगर मुझे ये मैंगो सर्च करना है और सर्च करना सिर्फ अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो उस केस में आप लिख सकते हैं साइट सेमीकोलन amazon.com and then mango. तो इट विल सर्च ओनली फ्रॉम द अमेजन. अब देखिए सारे टूल्स, सारे सर्च रिजल्ट हमें सिर्फ अमेजन के मिलेंगे, बिकॉज मैंने ये लिख दिया कि मुझे सर्च करना सिर्फ amazon.com से. इट विल गिव यू ओनली रिजल्ट फ्रॉम अमेजन. तो whenever you want to search a specific terms, a specific statement, a specific things on a specific website, that time you can use this tool, cite colon. That is second tip to refine your best out of the Google search. तीसरा है कि if you want to remove certain things, like आप कुछ सर्च करते हैं बट कुछ चीजें मुझे नहीं चाहिए, तो इन दैट केस जो भी चीजें आप सर्च करते हैं उसके आगे में आप लिख सकते हैं डैश एंड व्हाट यू डोंट वांट, जो आपको नहीं चाहिए. सो डैश, अगर मुझे कुछ सर्च करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स इन एनिमल्स, मुझे ह्यूमन में एप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो आई कैन राइट रिमूव ह्यूमन. जो आपको नहीं चाहिए डैश के बाद ह्यूमन लिख दीजिए. इट मींस इट इज गोइंग टू nullify or going to remove those tools, those searches जो आपको नहीं चाहिए. डैश के बाद जो लिखेंगे that will be excluded. ठीक है? बहुत सारे समय हम इमेज सर्च करते हैं या पीपीटी सर्च कर सकते हैं या पीडीएफ सर्च कर सकते हैं. मान लीजिए मुझे सिर्फ पीडीएफ चाहिए या मुझे सिर्फ पीपीटी सर्च करना है. जब मैं सर्च करता हूं तो मुझे सिर्फ पीपीटी चाहिए ऑन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म. आई नीड ए पीपीटी ओनली सर्च. अगर मैं सर्च करूंगा इसको, इट विल गिव मी नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस. पीपीटी भी देंगे, बाकी चीजें भी देंगे, बट मुझे सिर्फ पीपीटी चाहिए. तो व्हाट आई विल राइट फाइल टाइप डॉन पीडीएफ. तो मुझे सिर्फ पीडीएफ मिलेंगे. अब वो सिर्फ वो सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे मेरे लिए जहां पे पीडीएफ अवेलेबल है इस टॉपिक पे. ठीक है? अगर मैंने यहाँ पीपीटी, आप देखिए सब में पीडीएफ अवेलेबल है. दिस इज द पीडीएफ, दिस इज पीडीएफ. तो वेयर एवर पीडीएफ इज अवेलेबल, इट विल गिव मी ओनली दोज टूल्स. अगर आप इसमें सिर्फ पीपीटी यूज कर देंगे तो आपको सिर्फ पीपीटी पावर पॉइंट वाले मिलेंगे जहां पीपीटी अवेलेबल होंगे. तो अगेन यू कैन सर्च ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल टाइप बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ एक्सटेंशन. Is it clear? Yes, sir. Then another things when we are searching certain things, आप यूज कर सकते हैं. हम probably फिजिक्स में पढ़ते होंगे नॉर गेट, एंड गेट, और गेट. तो वो दैट इज बुलियन टाइप ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू यूज. सो वो आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं. और एंड कुछ चीजें मुझे चाहिए, जैसे मैं सर्च कर सकता हूँ रिएक्ट और एंगुलर. तो ये मुझे देगा, वो चीजें सर्च करेगा जहां रिएक्ट होगा या फिर एंगुलर होगा. दोनों जरूरी नहीं है, आइदर रिएक्ट और एंगुलर, बिकॉज मैंने और यूज किया है. अगर मैंने यहां यूज कर दिया एंड गेट एंड, इट मींस इट विल सर्च दोज ऑप्शंस या दोज रिजल्ट विल बी विजिबल टू मी जहां पे दोनों साथ साथ हो. रिएक्ट एंड एंगुलर बोथ विल बी टुगेदर. तो आप ये सब डिफरेंट परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन यू कैन यूज इट फॉर योर बेटर रिजल्ट. ठीक है? Yes, sir. इफ यू वांट टू सर्च सर्टेन थिंग्स, लाइक मैं सर्च कर रहा हूं कुछ रोल ऑफ एस्ट्रोजन इन rheumatoid arthritis, but I want only those result which is after 2020. So I can write it after colon 2020.
अगर मुझे बिटवीन बिफोर 2020 का चाहिए था, इन प्लेस ऑफ आफ्टर आई विल राइट बिफोर. अगर मुझे बिटवीन चाहिए तो आई विल राइट 2 ईयर एंड देन आई विल राइट बिटवीन. तो आपको आफ्टर, बिटवीन एंड आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन you can use it. So these are the results which is in between, after 2020 only, because I have put this type of extension. So in Google search you can use different types of extension and that will give you a best result. आपको बहुत सारे undesirable result नहीं मिलेंगे, unwanted result नहीं मिलेंगे. ठीक है. These are some of the tools. Then now come to Google Scholar. Google Scholar probably आप सारे यूज करते हैं. Same things you can use in Google Scholar also. Google Scholar is again one of the free and most useful tools जिसको आप अपने लाइब्रेरी के जैसे यूज कर सकते हैं. You can use Google Scholar as in your library also. How many of you have used Google Scholar as a library? No sir, only for search. Only for search. से ये मेरा प्रोफाइल है गूगल स्कॉलर का. आप मेरे प्रोफाइल में टॉप पे देख रहेंगे माय प्रोफाइल एंड लाइब्रेरी. जो कुछ भी सर्च कीजिए. वन मोर थिंग, रिसेंटली गूगल स्कॉलर हैज लॉन्च दिस पीडीएफ रीडिंग टूल्स. सो आप पीडीएफ अपलोड करके पीडीएफ रीडिंग टूल भी यूज कर सकते हैं गूगल स्कॉलर में. ये नया ज्वाइन आया है. ठीक है. अब हम सर्च करते हैं गूगल स्कॉलर में कुछ भी. मान लीजिए मुझे गट माइक्रोबायोटा सर्च करना है. आई हैव सर्च गट माइक्रोबायोटा एंड दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस आई हैव गॉट इट. ठीक है. अब इस ऑप्शंस में से मुझे कुछ पेपर्स बहुत अच्छे लगे जो मैं अपने फ्यूचर के कल को पेपर लिखूंगा या आई विल राइट ए रिव्यू आर्टिकल्स, आई विल राइट ए लिटरेचर सर्च फॉर माय पीएचडी. आई वांट टू सेव दैट वन बिकॉज अगेन आई डोंट वांट टू सर्च इट सेम थिंग. तो आई विल सेव इट. तो आप यहाँ देखेंगे, if you'll see here, you have an option, different options: save, cite. This is cited by. This is related articles. So if you will click on save, it will ask you where you want to save it. Because I have so many different libraries are there. So in your case, because you are going to use first time, so you can create a new one. This is my PhD topic. I have created a folder with PhD topic and I will save in that one. तो ये पेपर आप जो देख रहे हैं, this is highlighted one and it has been saved in my library in PhD topic. मैं ये सेव करना चाहता हूँ उसी जगह पे. तो see in this I have a folder with PhD topic. I will select it and I have saved it. So this is my library. So I can create library with n number of paper. Next time when you will go to your profile, there you are having your library here. आप इस लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए, आपके सारे लाइब्रेरी आपको दिखेंगे साइड में. तो मैंने भी एक टॉपर लाइब्रेरी क्रिएट किया था, दैट इज विद पीएचडी टॉपिक. तो जहां मैंने अभी 2 पेपर डाउनलोड किया था, ये 2 पेपर, इस दोनों पेपर को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. यू कैन रीड इट, यू कैन यूज व्हेनेवर यू वांट इट. सो दिस इज योर ऑनलाइन लाइब्रेरी. नॉट ओनली ऑनलाइन लाइब्रेरी, वेयरएवर यू विल गो, जिस भी कंप्यूटर पे यू हैव चेंज योर लैपटॉप, यू हैव चेंज योर लोकेशन, आप वहां पे अपने गूगल आईडी से, गूगल मेल आईडी से लॉगिन कीजिए. योर गूगल स्कॉलर विल बी अवेलेबल देयर, योर लाइब्रेरी विल बी अवेलेबल देयर. सो दैट इज योर ऑनलाइन लाइब्रेरी. एक चीज. सेकेंड थिंग, विथ एवरी पेपर यू आर हैविंग अ साइट बटन हियर. आप इस पे क्लिक करके यू कैन गेट रेफरेंस, ऑलरेडी formatted reference in a specific format. So here normally you can see the 5 different formats is given. Plus you can export these references to different reference management tools like BibTeX, EndNote, RefMan, RefWork. Up collectively also you can export out for a reference manager, or you can use one by one also. Again come back. मैंने सर्च किया था गट माइक्रोबायोटा, तो आई हैव गॉट दीज थिंग्स. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सर्च सर्टेन थिंग्स, लाइक मुझे सिर्फ वो टर्म चाहिए जहां गट माइक्रोबायोटा यूज किया हुआ है, तो आई विल यूज अगेन कोटेशंस. या एप्लीकेशन ऑफ गट माइक्रोबायोटा सर्च करना है तो आई विल यूज कोटेशंस. मुझे कुछ एक्सक्लूड करना है तो अगेन आई विल यूज दोज एक्सटेंशंस.
जब आपने ये सर्च कर लिया, मुझे ये पेपर अच्छा लगा, तो हियर यू कैन सी वन एडिशनल थिंग, that is related articles. So it is suggestion that whenever you are going to read articles, read those related articles also, because that is one of the best application of Google Scholar. ये आपको बहुत help करता है, and it is going to save your time, because Google Scholar, yeah, their AI tools automatically sort different articles which is related to your search tools only. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Recently one application came in Google Scholar which also give you for every paper, जो भी आप सर्च करते हैं, मान लीजिए मैंने सर्च किया गूगल गट माइक्रोबायोटा, this paper nature result review, this is a Q1 journal, so it automatically sort journals on different parameters, बहुत सारे parameter. If you can see plus button, you can use click plus button and you can use different types of tools. So this is going to help you, a kind of new researcher, or which is normally just they have started their research careers, to sort different journals on the different criteria, different parameters, quartiles के basis पे या different other things के basis पे. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछिए. If you have any questions, then otherwise then I will go to the drive, usage of Google Drive. Probably everyone might have used it, Google Drive. How to share different document by using Google Drive or Office 365. Probably आपको यूज करते होंगे. अगर आपके पास कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिए, otherwise we will go and we will see that one. Sir? Yes. Sir, I want to ask, sir, जैसे टर्निटिन हमारे यहाँ यूज होता है यूनिवर्सिटी में, तो उसमें अभी जैसे कुछ लोगों का आया फर्स्ट या सेकंड चैप्टर ही आया था थीसिस का, एंड आई एम अ न्यू रिसर्चर, सो आई हैव सीन कि उसमें लिखा हुआ आता है एआई जनरेटेड कंटेंट, वो प्लेजरिज्म में दिखाता है जी. तो सर आई जस्ट वांट टू नो कि हम क्विलबॉट यूज करते हैं या चैट जीपीटी 4 में क्या कोई ऑप्शन है कि अगर हम उसको यूज करें तो वो प्लैग में ना आए, पैराफ्रेज करके? नहीं, ऐसा कुछ लोग बताते हैं. अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे, बहुत सारे वीडियो बताते हैं जो आपके एआई चीजों को नलिफाई कर देते हैं. प्रोबेबली मैंने एक एप्लीकेशन देखा था, लेट मी सी इट, अगर वो मेरे पास अवेलेबल हो तो. जो नॉर्मली बोलते हैं कि एआई से आपको हम बचा पाएंगे, इट विल बी 100% सेव फ्रॉम एआई, बट ऐसा होता नहीं है. बहुत सारे टूल्स हैं जो कि सिस्टम्स आज के जितने ऐसे आप समझ लीजिए ना, जितने ऑप्शंस लोगों को आप जितना एप्लीकेशन आप निकालेंगे चैट जीपीटी या एआई टूल को यूज करने के लिए, जो जर्नल्स हैं या पब्लिशर्स हैं वो उससे ज्यादा टूल्स निकालेंगे हाउ टू डिटेक्ट दोज डिफरेंट थिंग्स. तो आप उससे बच नहीं सकते हैं. नॉर्मली बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब हम प्लेगरिज्म को देखते हैं तो 3 वर्ड हम यूज करते हैं. पहला, यूज द कोट्स. इफ यू डोंट वांट टू चेंज एनी सेंटेंसेस, यूज द कोटेशंस. जो कोटेशंस के अंदर में आ गया आप रेफरेंस दे दीजिए, तो वो एक ऑप्शन है, दैट इज यूज कोट. सेकंड वन इज रीराइट इन योर ओन लैंग्वेज. आप उसको पढ़िए, एसेंस को समझ लीजिए एंड देन यू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. ठीक है. और तीसरा, पैराफ्रेज इट. तो ये 3 सेंटेंस हैं, 3 डिफरेंट आप बोल सकते हैं स्टेज हैं जो आप जिसके बेसिस पे आप प्लेगरिज्म को कम कर सकते हैं. बट एआई टूल 100% यूज करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है. ओके सर. बिकॉज आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पे एक ऑप्शन है रिव्यूअर 2 करके या वेब रिसर्च रिव्यूअर 2 करके. कुछ पेपर्स आज आपने देखा होगा आजकल साइंस डायरेक्ट में पब्लिश हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें एआई टूल यूज किया गया था. और एआई टूल नॉर्मली देते हैं आपको कि दिस इज योर इंफॉर्मेशन और फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन और आई एम एआई टूल. लोगों ने सेम के सेम यूज कर लिए थे बिकॉज दे जस्ट कॉपीड एंड पेस्टेड. तो साइंस के लिए वो अच्छी चीजें नहीं है. हम एआई टूल को यूज करें, लेकिन
बेटर वे के लिए, ना कि पेपर लिखवाने के लिए। तो सर एक कहावत है ना, नकल के साथ अकल जरूरी है। हाँ, मतलब वो थोड़ा आप अपना माइंडफुल अगर होकर के यूज करें टूल्स को तो इट इज नॉट दैट मच। अब चैट जीपीटी हमने देखा था, चैट जीपीटी को आप यूज कर सकते हैं पेपर लिखने के लिए, ये पूरा का पूरा पेपर अपना लिखेगा। आप इसको यूज कीजिए फॉर गिविंग यू द सब हेडिंग्स ऑफ योर पेपर। टाइटल सजेशन के लिए लिख सकते हैं कि आप गिव मी सजेस्टेड टाइटल ऑन दिस एरिया, आपको 10 टाइटल सजेस्ट करके दे देगा, 5 टाइटल सजेस्ट करके दे देगा। इस पेपर को लिखना है, इसके सब हेडिंग्स क्या क्या पॉसिबल्स हैं, कीवर्ड्स दे दीजिए। तो फॉर दोज थिंग्स यू कैन यूज, दैट इज द बेटर वे यूज ऑफ दीज एआई टूल्स, but everything you cannot depend on the AI tools only. Sir, just a minute. I know that this session is going with a very good pace and participants are interacting with you. But it's my humble request that if we can move a bit faster. I have done. I am also just giving you answers, whatever they are asking. Otherwise, that's best. Anyone else? Good evening, sir. Yes. So my question is quite same. Actually, one of our professor also refused us to check grammarly, to check the grammar mistakes because system उसको recognize कर लेता है and then later जब हम जो publishers होते हैं they got that कि उसमें plagiarism है। नहीं, कि हम वो grammarly पे डाल चुके हैं। नहीं, ग्रामरली को यूज कर सकते हैं अगर आप ग्रामरली से, ग्रामरली में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन मैंने बोला आपको, वो ग्रामर चेक करेगा। दूसरा ऑप्शन है वो प्लैगियरिज्म चेक कर सकता है। ग्रामरली में एक और एक ऑप्शन होते हैं पैराफ्रेजिंग का। अगर आपने पैराफ्रेजिंग उससे करवाया, जैसे क्विल बोट है या पैराफ्रेज है, ये सब पैराफ्रेजिंग टूल्स हैं, तो पैराफ्रेजिंग करेंगे तो वो सारे एआई बेस पे आते हैं। सिर्फ ग्रामर चेकिंग जो अगर आप करते हैं, जहां मैंने आपको एक वर्ड फाइल ओपन करके दिखवाया था, जस्ट गिव मी वन ऑप्शन, एक सेकेंड। अगर मैंने सिर्फ ग्रामर के लिए यूज किया तो दैट इज नॉट गोइंग टू कम अंडर द एआई। Okay, sir. So is it go same for the plagiarism checker tools also कि अगर हम उसमें डाल भी दें but later वो show नहीं करता plagiarism में, because हमारे professors हमें मना करते थे इन tools को use करने के लिए if we want to publish something. नहीं, ग्रामरली आप ग्रामर एप्लीकेशन का ग्रामर के लिए कर सकते हैं। ग्रामर आप ग्रामरली आपको पंक्चुएशंस का एरर बता सकता है, सेंटेंस के थोड़े टेंसेस के बारे में बता पाएगा। लेकिन पैराफ्रेजिंग के लिए यूज करेंगे ना, पूरे सेंटेंस आप दे देंगे। आप देखिए, जैसे ये पैरा वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ, अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मैंने ये ले लिया और आई एम गोइंग टू गो टू द चैट जीपीटी। आई विल गिव दिस इन कंटेंट। मैंने वो कंटेंट दे दिया पैराफ्रेज इट, वो मुझे पैराफ्रेज करके देगा। इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस वन, दिस कंटेंट जो मुझे डिलीवर करके दे रहा है चैट जीपीटी, इट विल कम अंडर द एआई एप्लीकेशंस, एआई टूल, द प्लेगरिज्म। Okay, thank you, sir. Or anyone else? Yes, sir. Yeah. वो सिमिलर ही क्वेश्चन है। हमने आप अगर रिफ्रेश पैराफ्रेज करने के बाद उसको अपने हिसाब से राइट किया है और टाइप किया है, तो उसके बाद में वो प्लेजरिज्म दिखाएगा? नहीं नहीं, अगर आपने पैराफ्रेज कर लिया और उसको अपने लैंग्वेज में लिखा है तो फिर पैराफ्रेज करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली बेस्ट वे क्या है कि आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपने लैंग्वेज में उसको लिखिए। जैसे अगर यहाँ 39 पार्टिसिपेंट्स हैं इस सेशन में, सिंपल इफ आई विल आस्क दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबसे मैंने सिर्फ पूछा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो 39 के 39 ना डिफरेंट वे में लिखेंगे, बोलेंगे। कोई अपना नाम बोलेगा माय नेम इज दिस वन, आई एम फ्रॉम दिस वन, कोई बोलेगा आई एम दिस वन। तो सबके अपने अपने स्टाइल्स हैं। सिर्फ इंट्रो आपने हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, 2 लाइन का, उसको 39 लोगों ने अपने अपने वे में बताया। तो सिमिलरली एक पैराग्राफ को अब अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। तो राइट इन योर ओन लैंग्वेज, दैट इज द बेस्ट वे। ओके, थैंक यू सर। Okay, anyone else who is having any query to ask to Prabhakar sir? Okay, sir. So I find it that the participants, they are actually
leave the participant. I am very much content with the talk that you have given to us and got to know about some of the recent that the tools which are actually using and to get it more refined. कि हम उसको और कितने better तरीके से use कर सकते हैं. So obviously this was very helpful for us and for our participants also, and we expect that we may have your complete session on one or other tool in future as it may be discussed with Gopalji sir. So with this I will be concluding the session for today's. Just one second. These are some of the tools. आप इसमें से tools को use कीजिए. बहुत सारे tools हैं. आप Google, YouTube पे वीडियो सर्च करेंगे on every tools you can get the number of videos. आप टूल को यूज कीजिए लेकिन विद इन ए लिमिट. किसी चीज को मिसयूज करेंगे ना तो that is not good for science. Yes sir, sure. This advice is actually very useful for us if we are using it in limit with क्या वही सेम सेंटेंस है, नकल के लिए अकल के साथ में अगर करेंगे तो these are actually good for us to make our time more useful for other things also. We can put some more time for betterment of any research article or anything else. So with this I will be concluding the session, and anyone else who is willing to have some feedback for this session, any participant? Okay, Shwani, you can unmute and you can say a few words if you want. Good evening, sir. Thank you so much, Poonam ma'am and Prabhakar sir, both for having this session. मैं बहुत नई स्कॉलर हूँ और मेरा भी जस्ट RDC लेवल का ही स्टेज है. AI को लेके बहुत सारे मिथ्स थे मेरे. People were saying कि ऐसे ही हो जाता है, बस उसमें चैट जीपीटी से सारे चैप्टर्स लिखा जाते हैं. थैंक यू सो मच फ्री, स्पेशली फॉर द फ्री टूल्स कि हम जब भी कोई वेबिनार या सेमिनार अटेंड करते हैं वो हमें कोई ना कोई पेड टूल्स कोई पिच कर रहे होते हैं कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए. आई लव द सेशन. इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन जस्ट नॉलेज शेयरिंग. Thank you so much. It was very useful and I'll certainly use, and I'll also request कि ऐसे और sessions हो तो please inform कीजिए कि us in database, and I would love to attend. Neha, as I mentioned about the LinkedIn page of Gopalji sir, and also I have tagged my LinkedIn profile. In most of the cases, sir is going to post all these upcoming sessions on the different topics of relevant science, any topic we actually conduct. Actually, he propose and conduct many of the topics related to the biological sciences and research oriented also. So you may get connected with Gopalji sir and to my page, and you may get information about the forthcoming all the sessions which we may be conducting on different topics. Thank you ma'am. Thank you ma'am. And I have a request. If you are from the biochemistry background, biology background, molecular biology background, I am just sharing my YouTube channel link. Yes, sure. If you like the video, you can subscribe it and you can write your comments also. Okay, so with this we will begin. Sir. Yes. So thank you for sharing our insightful knowledge in this forum, and I really used this 1 hour usefully, and I thank Gopal sir, Poonam ma'am for doing this to us, and I'm feeling grateful for attending it. Thank you so much. Okay, so with the permission from the sir, and I hope now the queries are the sorted one. So sir, I'll be taking your permission to end this session, and thank you all for joining the session and making it a kind of interactive session, because every session, if it is one-sided, that is not very much useful. If it is interactive, then actually the purpose is solved. So thank you everyone once again, and thank you Pranav sir. Thank you so much. Good night everyone. Take care. Thank you ma'am. Good night sir.